Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is BA Part First, Paper Second, and today we are going to study about the ideas of Dr. B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution, and his ideas about safeguards for the depressed class. And he is talking about the rights and all the safeguards which are necessary for the protection of rights of depressed class, that is scheduled caste, and that can be seen as first one is right to an adequate and effective representation in the central and state legislatures, and according to Dr. B.R. Ambedkar, their representation should be equal to the ratio of their population to the total population. And second one, he talks about that there should be weightage. Weightage should be given so as to reduce a huge communal majority to reasonable dimensions. And third one is the representatives should be elected by separate electorate. And next one is right to adequate and effective representation in the executive and right to representation in the services. And it would be in proportion to their population, subject to rules relating to minimum qualification, age, etc. And next one is there should be at least one scheduled caste member on public service commissions to look after their interests of the community. And financial responsibility for the higher education of the scheduled castes must be assured. So these are the ideas of Dr. Ambedkar when he talks about the democracy in India. And before this, he has stated the conditions necessary for the successful working of democracy in India. But along with this, Dr. B.R. Ambedkar also emphasized that cannot be a successful democracy in India if the depressed class is devoid of their rights, or there will not be any special safeguard or other special safeguards for the protection of their rights, and for the upliftment of these classes of the society. आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों के बारे में, जो उन्होंने हमारे समाज के जो वंचित और दलित वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, और इन सब के बारे में जो उन्होंने इनके अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ गार्ड्स के लिए उन्होंने जो बात की है, इसके अंतर्गत उनका ये कहना है कि जो केंद्रीय और राज्य विधानसभाएं, विधानमंडल है, उनके अंतर्गत इन ये जो क्लासेस ऑफ सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी है, समाज का ये जो वर्ग है, इनके लिए पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। और इनका जो प्रतिनिधित्व है इसमें, ये इनके समस्त जनसंख्या में इनकी जनसंख्या के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग इनको मिलना चाहिए। और नेक्स्ट इनका आइडिया है कि इस तरीके से इनका विकास करना चाहिए ताकि इनका विभिन्न हर तरीके से इनका डेवलपमेंट हो सके, ये आगे आ सके। इसीलिए इनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी आपके पृथक जो आपके निर्वाचक हैं उनके द्वारा इलेक्ट होने चाहिए। और इन्हें कार्यपालिका में भी पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्हें सेवाओं में भी इन्हें राइट टू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जो सभी आपके जितने नियम हैं, जितने न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, एज है, इनको ध्यान में रखते हुए सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व है वो इनके जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। और इसी तरीके से इनका जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट मस्ट बी assured. Thus we can see that Dr. B.R. Ambedkar was quite aware about the, and very much he was focused on the special safeguards for the protection of rights and for the protection of interest of the depressed class of the society. And
Therefore he has given his idea and how to protect their interest and how the government can do the works and functions in the interest of this class. That's all for today from my side. Thank you very much.